हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स। कल हमारा मैच था वॉटफोर्ड के साथ और पोस्ट मैच हम कल नहीं आ पाए लाइव बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। तो आज आपके सामने हम हैं और कल के पोस्ट मैच के बारे में बात करेंगे। सारे लोगों ने मैचेस तो देख ही लिए थे, क्या हुआ मैच में रिजल्ट सबको पता है अब। सो लेट्स स्टार्ट विद मुदित भाई। मुदित भाई, रिजल्ट के ऊपर क्या रिएक्शन है? एक्सपेक्टेड तो नहीं था बट वी वी वांट जो भी गेम हमको लगता है कि हमें जीतना चाहिए नो वो स्पेशली आफ्टर अ गुड जैसा भी था बट गुड रिजल्ट इन मिड वीक दिस वाज सपोज्ड टू बी अ विन दे शुड हैव scrubbed this opportunity by the neck and should have finished the game. कितनी बार हुआ है जब हमने पॉइंट किया है कि फिनिशिंग फिनिशिंग क्रिएशन पहले क्रिएशन को लेके रोते रहे, क्रिएशन थोड़ी हुई तो फिनिशिंग को लेके रो रहे। अब ये जो कंफ्यूजन है आई डोंट थिंक इट्स मोर टू डू विद हाउ द टीम इज बीइंग प्लेइंग। टीम अच्छा खेली, अटैकिंग वाइज दे प्लेड वेल, दे क्रिएटेड गुड चांसेस, बट वो फिनिश कौन करे? अब अगर पीपल लाइक रोनाल्डो एंड ब्रूनो आर नॉट मेकिंग गुड डिसीजंस, व्हाट कैन वी डू? मतलब ये दोनों जब अगर नहीं खेलेंगे अच्छा तो गोल आउटपुट कहाँ से आएगा? देयर इज Exactly, नो वे मतलब वी ये कैन। 19th प्लेस टीम है और इसके अगेंस्ट हम 3 पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं, तो फिर टॉप 4 तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 3 पॉइंट्स, एक गेम तो वो हरा चुके हैं हमको ये सीजन। नो बट मतलब दैट वाज डिफरेंट टाइम ना, उस समय हमारा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था। दैट वाज लाइक ओले गॉट सैक्ड बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, तो yeah, दैट I वाज अ mean, डिफरेंट for टाइम। I have been a biggest the biggest Nemanja Matic critic. I don't like the way he plays, and yesterday he was the one who changed the game. करेक्ट। That's what is kind of shocking about this United team. Yeah, A player who has lost his legs came on and showed how they should be playing with vigor, with passion, with more attacking intent. It was great to see. I couldn't believe my eyes कि ये आके दिखा रहा है इनको seasoned players who've been performing for us consistently, भले ही जैसे भी हो रिजल्ट्स, बट परफॉर्मेंस तो आती थी। कल वो भी नहीं था। एंड इट्स नॉट लाइक वॉटफोर्ड डोमिनेटेड अस और एनीथिंग। इतने चांसेस बनाए यार, मजाक, मतलब मजाक ही है फिनिशिंग तो। Many people will kind of uh, hate me for saying this again. Mostly my friends, but Ronaldo, man, finishing kal, fuck, unreal, unbelievable. not only Kal Mudit bhai. I'm gonna give you and everyone who's watching this a stat. In his last 10 games, he has scored once. ठीक है, अभी That scoring one is, goal came against Brighton. if you're not scoring, at least ensure that when you're in a position to score, see if you can create a chance. I get his instinct, striker instinct है उसका कि उसको वो फिनिश करना ही था, बट वो पास एक एक पास और गेम जीत जाते हैं हम। वो एक डिसीजन ये था उसका। वो ब्रूनो का भी डिसीजन था, रोनाल्डो वाज ओपन। ब्रूनो का तो डिसीजन था ही, आई गेस वो ब्रूनो की ही बात कर रहा हूँ मैं। ब्रूनो का तो था हाँ ही हाँ। वो प्रॉब्लम। और रोनाल्डो का ये था कि रोनाल्डो ऑल्सो हैड चांसेस एंड फ्रस्ट्रेट होना उसका जायज था, बट उसके पास भी चांसेस बहुत आए उस ब्रूनो के अलावा भी। ब्रूनो का तो चल टट्टी डिसीजन था ही, बट उसके अलावा भी रोनाल्डो को बट देखो तो ही हैड सेम चांसेस। थिंग, हम सेम थिंग पर राशफोर्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, सेम थिंग पर हम एंथनी मार्शियल को क्रिटिसाइज करते हैं, बट विग्नेश भाई, ब्रूनो डूइंग द सेम decision making in a crucial time at a crucial juncture of the season, तो क्या ये क्या है कि कोई छुआछूत की बीमारी है जो रैश एंथोनी से होके रैशफोर्ड को आ गई, रैशफोर्ड से होके अब ब्रूनो को आ गई? क्या चल क्या रहा है? So, I mean, क्या मतलब you know when you're not scoring, when you're chasing a result. जब फाइनल मिनट में गेम था, आई थिंक ब्रूनो हैड द बॉल at the edge of the box. Or instead of passing it to, I think it was Shaw or Sancho who was free in the wings, he chose to took a shot in the 91st or second minute. हाँ, बहुत So घटिया मतलब डिसीजन क्या? था वो। तो बहुत मतलब क्या बहुत आप चाहते क्या हो? सबको हीरो बनना है हमारे टीम में। इतने सेल्फिश प्लेयर भरे हैं हमारे टीम में। एवरीबॉडी कल वांट्स टू बी अ हीरो। कल बहुत सेल्फिशनेस दिखाई है प्लेयर्स ने। कल टीम की तरह खेला ही नहीं।
कल क्या बहुत some समय से दिखा रहे हैं। see हाँ बट हाँ राज के विघ्नेश किसी मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते 90 प्लस percentage of हम्म position ball position you are having हम्म and a team who the entire season hasn't kept a single clean sheet keeps a clean sheet against you कितना मतलब घटिया खेल सकते हो आप अब हम्म मतलब इट वाज लाइक कि प्लेयर भूल गए थे कि पोस्ट कहाँ है बैक ऑफ द नेट हाउ नॉट टू फाइंड द बैक ऑफ द नेट दैट वो एक डेमो था कल हमारा यहाँ मोहक भाई भी यही बोल रहे हैं रॉन 12 विनिंग गोल्स ग्रेट मारा है विनिंग गोल्स it's like it's expected out of him. Some things that he did yesterday were downright unbelievable for me. Same for सी Bruno. The things that they can do on the pitch, वो तो चल we see. But आई at least even if you're performing bad, at least understand the fact that game में किसी तरह involve रहो. You know, at या least try to do something else if you're not able to kind of finish. That's how you सो divert your game. सो अगर आप बुरा खेल के हारते हो ना तो समझ में आता है कि यार घटिया परफॉर्मेंस था ये वो बट इतना अच्छा खेल के आप अगर एक गोल नहीं मार पाते हो वो भी इतने क्लियर कट चांसेस तो क्या बोले फर्स्ट हाफ क्या में ही खत्म बोले होना चाहिए था ये गेम फर्स्ट हाफ पे ही फर्स्ट रैप अप पहले पहले 15 मिनट में 3-0 होना चाहिए था पहले 15 मिनट रैगनिक में रैगनिक का ये आया था ना इसके ऊपर एक कमेंट भी आया था दैट वी हैड 5 क्लियर कट चांसेस एंड वी डिडंट टुक वन वी हैड सो मेनी वन ऑफ 1v1s so our coach can do only so much as to create a situation for the players has to finish the game तो यप अब ये अगर हम पिछले एक मैच का बात नहीं है ये पीछे हम एक डेढ़ महीने का अगर हम उठा के देख लें तो ये या कंटिन्यूअसली यही चल रहा है कि वी आर नॉट एबल टू फिनिश इट ऑफ मतलब ये एक तरह से फिर हमको उस एरा में लेके जा रहा है लुई वैन हाल एरा में बस डिफरेंस ये था कि हम क्रिएट ही नहीं कर रहे थे हम क्रिएट कर रहे कुछ फिनिश नहीं कर रहे सो नाउ विद एंथनी मार्शल आउट ऑफ द पिक्चर Rooney, I'm saying Rooney every time we are not scoring goals, we go for Rooney. Ronaldo absolutely out of form, and it looks like age is finally catching up to him. वो sharpness in the box, वो sharpness नहीं नहीं आ रहा है. I may be ये wrong. वो अगले आने वाले 10 गेम में वो मार के गोल सब बराबर करते, but still at this point of time वो sharpness, वो presence of mind नहीं आ रहा है रोनाल्डो का, वो finishing नहीं आ रहा. So हमने are we डिस्कस भी looking? किया था हमने Yeah, डिस्कस भी किया था कि या तो उसको चांसेस कम मिल रहे हैं और विच वाज ट्रू ही वाज नॉट गेटिंग एज मेनी चांसेस फ्रॉम द विंग्स और फ्रॉम मिडफील्ड बट अभी इट्स हैपनिंग you know we've seen correct. in the last two games there have been good passes towards him Yeah. also and yeah he should be finishing those but it's okay. अभी क्या बोल सकते हैं तो ठीक है हमारा सो हमारा सो स्ट्राइकर अगेंस्ट पोजीशन का क्या रहेगा व्हाट विल बी लाइक अब तो हम नहीं ये सीजन तो भूल क्या जाए नेक्स्ट क्या क्या सीजन रहेगा कुछ है ही क्या नहीं स्ट्राइकर का कुछ तो विजन होना चाहिए ना अपने क्लब के पास नो दैट वी इन हैव द टू समर प्लेस हाँ इन द समर यू डेफिनेटली नीड वन लेकिन अभी सीजन खत्म होने तक वी आर बेसिकली फक्ड कवानी ओके एक गेम खेलता है महीना भर इंजर्ड रहता है रोनाल्डो if का say ये था Cavani is back if say Cavani is back and he is able to play throughout the rest of the season ना Vignesh will you drop Ronaldo for Cavani so first of all even hypothetically that's not going to happen even hypothetically Cavani no, is not going to be fit for the not for entire 90 rest of the minutes season you are not so going to use it for 90 minutes huh? realistically okay realistically on current form anybody starts over Ronaldo anybody I mean, don't get me wrong, I'm his one of the biggest fans. But one goal in the last 10 games, and with the amount of chances you get, especially against Watford, you should be hitting hat trick, man. You should Correct. be hitting a hat trick. नहीं वही दैट्स व्हाट चलेगा एक बार अगर हम गेम भी देखते हैं और समझ आता है कि दे आर नॉट एबल टू कट थ्रू द लाइंस क्योंकि वो लोग का डिफेंस इज टू हाई अप द फील्ड एंड मिडफील्ड इज नॉट एबल टू बीट देयर प्रेस उसके बाद वो भी अगर ना हो एंड वी काइंड ऑफ रन द प्रोसीडिंग्स वी हैव दैट विजन दैट वी आर क्रिएटिंग सम गुड मूव्स और उसके बाद अगर चांसेस मिलते हैं सो ही शुड बी आइडियली burying at least one Ronaldo, absolutely. At least one. Yeah. No doubt. हाँ कम Bruno से has कम to score एक that गोल goal. तो चाहिए था कल yeah Bruno has to score that goal. How he missed that, it's insane. It's beyond imagination insane. yeah It's insane. मतलब मैं देखते ही पागल हो गया था कि मेरे को देखना ही नहीं है मैच.
देखना मोदित ही भाई, नहीं। I'm not, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, I was watching the game on Hotstar on my phone. I couldn't watch it on my television. I threw my phone 2 to 3 times. होता है। मेरा ग्लास टूटा हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा ग्रुप में। मैं इतना फ्रस्ट्रेट अरे था कल। I mean, अरे ये इसमें ऐसे चांसेस कैसे मिस कर स्क्रीनशॉट सकते मारेगा हो? तो टूटा हुआ ग्लास नहीं दिखेगा, फोटो खींच के भेजना दूसरे हाँ, फोन सॉरी। में। सॉरी, माय बैड। तो शोज की कितना पैथेटिक थे हम। मैं इतना फ्रस्ट्रेट था कल, मैं कल किसी से बात नहीं किया पूरा रात। मैं पूरा सुबह उठा and I was still feeling down कि I was like, come on यार, I mean, Arsenal are catching up, Spurs are catching up, हो गया, आज नहीं वेस्ट हैम जीत गया। we are not coming top 4, ये एक्सेप्ट कर लो। Yeah. I Yeah, Next. no, Getting I into the was, topic, top four. West Ham won today. yeah, Arsenal defeated Wolves for after being 1-0 down for majority of the game, almost till 70, 80 minutes, around something like that. And they went on and scored 2 goals. Spurs be 50-50 hai. They might or they might not, but these two teams are there. And with Arsenal having 3 games in hand and 2 points behind खत्म us, है। और स्पर्स क्या भाई, स्पर्स जबरदस्त फॉर्म में दिख रहा है। इट्स दे आर लुकिंग प्रीटी डैम गुड टू क्रिएट yeah, yeah, good chances and yeah, and win games. And you look at the correct. timing of our fucking insane bloody bastard fixtures, fixtures. ये कोई मजाक है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। yeah, किसी टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ इस बार लीग में कि उनको बैक टू बैक सिटी फेस, फिर टॉटनहम एंड देन लिवरपूल, और बीच में एथलेटिको। पागल बैठे हैं क्या? लग गए उधर ही, but सीजन खत्म है अपना। so जो Mudit भी bhai, do है you वो think that that's the our reality ना. soul, do you think कि अपना सोल फोकस अभी चैंपियंस लीग ही होना चाहिए? एब्सोल्युटली, बट You वही know, है, इट्स अ डबल एज hmm, sword again. It's crazy if you don't have the guarantee of winning the Champions League despite playing great for yeah, 180 or whatever minutes over two legs, yeah, yeah. जैसे भी है, वो गारंटी नहीं है। तो हाउ बस कैन वो यू बात नहीं है मुदित भाई, मेंटालिटी नहीं है प्लेयर्स की. मेंटालिटी देख यार, मेंटालिटी आई थिंक वो गेम इज सूटिंग दीज प्लेयर्स मच बेटर। आई थिंक सो। मतलब लास्ट मैच को छोड़ दो, एक्सेप्शन रख दो, वी वर डोमिनेटेड बट वी स्टिल एंडेड अप गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। कुछ Okay, तो निकाल लिया। Mudit bhai, let's see. You said we were dominated by Atletico. They are a good team. We were हाँ not dominated by Atlanta. We were हाँ dominated by Villarreal. हाँ, Correct. बट So वी जो भी फाउंड वी एक So it's not about just getting आप जो टीम से आप डोमिनेट हो रहे हैं, they are missing their chances and most of them are not in form. या Atletico is not in the form right now. Atlanta and Villarreal are not at that level. The teams that are going to be in form, they are not going to miss those many chances. वो भी हमारे है। अगेंस्ट जो चांसेस मिस हो रहे हैं, तो हमारा जो चांसेस है ऑफ विनिंग यूसीएल इज वेरी वेरी लो. Yeah. बट दैट्स द ओनली थिंग वी कैन रियलिस्टिकली डू। आई मीन वही चीज है जिसको चेस कर सकते हैं, और किसी में तो है भी तो नहीं। अब और प्रीमियर अब तो लीग उस टॉप हिसाब 4 से तो ये लगता है कि इट वुड हैव बीन बेटर कि हम यूरोपा में अभी खेलते रहते, यूरोपा जीतने का चांस रहता, अच्छा रहता अपना, देख लिया वो और वहां लास्ट से हम सीजन। चैंपियंस लीग के लिए निकल जाते. अब लास्ट सीजन ओले वाज देयर ना, मैनेजर इज चेंज्ड, इट कैन चेंज थिंग्स ना. यूरोपा इज नॉट दैट लेवल ऑफ कंपटीशन कंपेयर्ड टू यूसीएल. यूसीएल का कंपटीशन का लेवल अलग है. ब्रो, हम एग्जैक्टली। ओले की वजह से यूरोपा लीग फाइनल नहीं हारे हैं। इट्स डाउन टू द No, I'm प्लेयर्स। not saying about you only. I'm saying about, critical moment where managers do make certain decisions. इवन In the final, स्पीकिंग the स्पीकिंग ऑफ substitutes I think was wrong by Ole. स्पीकिंग That's the स्पीकिंग ऑफ only विच, thing. स्पीकिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, यस्टरडे मुझे एक बात पसंद नहीं आई। रैशफोर्ड इज आउट ऑफ फॉर्म, हाउ कैन यू सब हिम इन? हाउ? Because I don't वो know, because इतना, at मतलब यू, आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिज फॉर्म राइट नाउ, और उसको सब इन कर रहे हो। At half time, I thought कि we should be subbing off Ronaldo, bring out एब्सोल्युटली। Sancho. So मतलब ऐसा क्यों? I mean, पता नहीं। I mean, उसके शायद रोनाल्डो के क्लॉज में है कि he should be playing each and every minute. ऐसा नहीं I don't, है। I think that the I don't biggest want to be thing too about harsh, but Ronaldo is यार, Vignesh, I think the biggest thing goes towards Ronaldo is his history. He is not in the right form, but the history of Ronaldo, Cristiano Ronaldo, is such that everybody thinks twice before taking him off in any game, especially in the game which is balanced at that point of time. It's nil-nil. so 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 any Pratyush manager bhai, will think twice. against Brentford, we were 1-1. Yeah, We subbed him off. We ended yeah, up winning 3-1. correct, So why correct. not do that again? So if Because that was a different game. No, 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 The I'm just saying, मेरा no, मेरा मेरा point yeah, ये है I कि, know. हाँ, मेरा I'm getting point you, ये है कि, getting you. I will answer हाँ, you मेरा that.
मैं आपको बताता हूँ, प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है। ब्रेंटफोर्ड डू नॉट सिट बैक, दे अटैक, प्रेस यू इन द मिड एंड विन द बॉल, ट्राई टू विन द बॉल फ्रॉम देयर। अब वहां पे क्या हो रहा था कि रोनाल्डो का पेस नहीं होने के कारण वी वर नॉट एबल टू काउंटर। वो चेंज किया, रोनाल्डो को हटा के रैशफोर्ड को लाने के कारण पेस आया था। कल के मैच में इट वाजंट लाइक दैट। वॉटफोर्ड वाज सिटिंग टीम, सिटिंग टीम के अगेंस्ट था, यू नीड एरियल अवेयरनेस, एरियल एबिलिटी। रोनाल्डो वाज शिट, दैट इज डिफरेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक द एबिलिटीज दैट यू नीड टू ब्रेक अ टीम। डिफरेंट मैच, डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले, डिफरेंट प्लेयर्स आर नीडेड। नो फेयर इनफ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर उसको सब ऑफ करने, चलो रोनाल्डो छोड़ दो, XYZ प्लेयर को सब करने से अगर आपके टीम बेनिफिट हो रहा है और यू आर गेटिंग अ रिजल्ट आउट ऑफ दैट, व्हाई नॉट? इट क्यों कुड नहीं हैव करोगे आप? डन। लेकिन रीजन क्या है ना, इशू क्या आता है आपके साथ? इशू आपके साथ ये आ जाता है कि कवानी इज इंजर्ड। The only player that has movement comparable to Ronaldo is Cavani. अच्छा मुझे बाकी एक बात किसी भी बताओ, प्लेयर को उस पोजीशन में मूवमेंट नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो रोनाल्डो, ठीक है, कल हमें एरियल स्ट्रेंथ की जरूरत थी? डू यू थिंक? मे बी, नो, मे बी नॉट। नो, नो, नहीं, नहीं बट थी। अगर हम अगर एरियल ग्राउंड लेवल पर ही इतने चांसेस क्रिएट कर रहे थे कि हमें जरूरत ही नहीं थी। नहीं थी, बट ग्राउंड लेवल पे देखो, ग्राउंड लेवल चांसेस तो हमने मिस कर दिए ना। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, अगर हाफ टाइम पे अगर आप चेंज रोनाल्डो को सब ऑफ कर देते तो माइट हैव बीन अ डिफरेंट रिजल्ट। मैं उस माइट पे हैव बीन, एंटायरली माइट ब्लेम नहीं कर रहा हाँ, हूँ रिजल्ट। आई एम जस्ट नहीं सेइंग नहीं करेक्ट। कि द नंबर ऑफ चांसेस इज मिस्ड इज, क्या बोलो। ठीक है, It's like, you know, it's a phase, you can it's a keep phase. on blaming people, you can keep on blaming मुदित people, you can keep on मुदित भाई, pointing every मुदित भाई, single दैट one। दैट मेरे को उसके कल वाले गेम से प्रॉब्लम नहीं है। माय प्रॉब्लम इज कि 1 गोल इन हिज लास्ट 10 गेम्स। phase क्या बोले अब? कुछ गलत बोलेंगे Yeah, तो exactly, see, देख मैं ऐसा है ना अग्री करता हूँ विघ्नेश। आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू विघ्नेश। से, आई अग्री विद एवरीथिंग व्हाट यू या से, आई टोटली गेट इट, Hey, बट आई डोंट वांट टू या see the स्पीक ऑन thing, कैमरा फॉर दैट। correct। See the thing is now, because the thing is it's not just about Ronaldo right now. It's about the entire team. It's not just Ronaldo who is missing the chances. Rashford is missing the chances. Elanga missed the chance yesterday. That was also a very very good chance. Backheel जो था Pogba का, and he ran बहुत it. बहुत अच्छा He था। missed that. That was a very very good chance. या Bruno missed chances. So it's not just Ronaldo who is missing, but just because he has that expectation level and that level of performance, कि सब उसी के ऊपर चल जाते हैं कि Ronaldo is missing chances. Everybody is missing the chances. तो या it's just that रोनाल्डो का ऑरा ये है कि वो स्किपगोट हो जा रहा है यहाँ पे। It's the whole बिल्कुल। team, it's the whole team that is not एक performing कमेंट right आया now। है उस पे, देखो हाईलाइट कर दो। इंटरेस्टिंग, ही इज राइट। आयुष, आयुष या मेरे को Exactly आयुष, वही मैं भी बोल रहा था। It's easy to scapegoat players, but the whole team is right now not in a position to do what they are needed to be done, what is needed to be done on the pitch। कर ही नहीं रहे यार हमारे प्लेयर्स काम। See, don't get me wrong, Pratyush bhai. I'm not scapegoating only Ronaldo. Of course, कल करेक्ट बहुत करेक्ट से करेक्ट। players ने chances miss किए। Bruno was also shit yesterday. Hands up. Bruno was shit या yesterday. He also should have scored 2 goals yesterday. Agreed. करेक्ट। But that you can excuse him for that one game. Apart from that, वो, I mean, he's been consistent. He's नो नो the नो only नो player who's created more chances in the league. करेक्ट, उसके assist भी ज्यादा है। मिडिस अब वो मिडिसब्रो का उसके मिस, अकेले पे आप विग्नेश मिडिसब्रो fair, का मिस, हाँ तो आई एम yesterday's miss, सेइंग कि एटलेटिको सो मैच उस he was just out of that match, total मैच कहीं पे भी वो नहीं दिखा था एटलेटिको मैच में। तो then you go back to, so सिर्फ वो वेस्ट नहीं, हैम कोई नहीं मैच। दिखा था। the problem is we've grown too dependent on that guy, है ना? या And when he एग्जैक्टली, even आप when he even आप plays हमेशा उसे ही 70% डिपेंड of कर his रहे हो। capability, तो वो बुरा ही दिखेगा। अगर वो 70% अपनी I'm कैपेबिलिटी पे खेले, क्योंकि अपन ने हमेशा मेरा 100% देखा है उसमें। या So it's obvious that we are thinking that he you can't consistently keep, keep exactly, हाँ, doing so it. आप हर गेम that's में what the सी, thing ना। मेरा मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलरेडी स्ट्राइकर शॉट है, मार्शियल लोन पे चला गया है, कवानी इंजर्ड है, रैशफोर्ड का फॉर्म स्ट्रगलिंग है, इलंगा पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो बीइंग अ रोनाल्डो, 1 goal in last 10 games is how disgusting that form is। You cannot और मैं defend ये him, भी नहीं बोल रहा हूँ कि it's as हार्ड simple as चांसेस थे, that। क्रिस्टल क्लियर चांसेस थे, मैंने ओपन गोल आप मिस कर रहे हो। ठीक है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हैट्रिक ईच एंड एवरी गेम, भाई एक एक गोल मारो चल जाता है।
अंडरस्टैंडेबल. अभी देखो विघ्नेश भाई, ऐसा होता है ना, जब कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहता है ना, क्रिकेट का ही देख लो एग्जांपल, व्हेन अ प्लेयर इज आउट ऑफ फॉर्म ना, उसको एक फुल टॉस दे दो ना, उससे मिस हो सकता है, वो बोल्ड हो जाता है. अगर ऑन 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 द स्टंप्स लेफ्ट फुल टॉस ना, उसमें भी वो बोल्ड हो या जाता है. बट वही या प्लेयर जब फॉर्म में रहता है ना, तो कोई एक इन स्विंगिंग यॉर्कर मारो तो भी वो डिग आउट कर लेता है प्लेयर. सो इट्स या ऑल अबाउट मोमेंटम एंड फॉर्म. और ये बैड लक बोलो या तो फिर कुछ भी बोल सकते हो, बट रोनाल्डोस फॉर्म डिप्ड एट द रॉन्ग मोमेंट फॉर अस. अच्छा, कल का छोड़ दो. और एक स्टैट है. इन द लास्ट 7 गेम्स वी हैव ड्रॉन 5. Well, Atletico one was a good result, so that's नहीं okay. नहीं, वो छोड़ दो, But वो छोड़ दो. बट स्टिल कितना yeah, मतलब कौन से फॉर्म में हम कहाँ जी रहे. हम टॉप 4 के रेस में हैं, यहाँ हमारी फट रही है. और जब हम एक्चुअल टाइटल रेस में होंगे तब ये लोग क्या करेंगे. वो प्रेशर झेल पाएंगे ये लोग. आयुष का एक और देखो, कमेंट आया और बहुत ही बढ़िया yeah. कमेंट है. Another बहुत problem I गुस्सा saw है उस yesterday is बंदे पे, Bruno बहुत becoming very गुस्सा है. selfish. In the first half, he missed so many chances कि वो खुद. आयुष आयुष भाई, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये ऐसा लग रहा है ना कि छुआछूत की बीमारी है. Started with Anthony Martial, went to Rashford, now to Bruno. Whenever these players like they are getting into those positions ना, they are becoming very very selfish, जबकि सामने वाला प्लेयर ओपन रहता है. एग्जैक्टली, वही तो प्रॉब्लम रहा है हमारा. आई थिंक वही मैं बोल रहा. एक बार मैंने इसको पहले भी बोला है, और मैं एक बार फिर ये बोलना चाहूंगा कि वी डोंट नीड हेडलाइन मेकर्स एनी मोर इन दिस टीम. एब्सोल्युटली. वी नीड टीम प्लेयर्स. वी आर नॉट गेटिंग दैट. हम लोग अभी भी वो हेडलाइन मेकर्स के पीछे ही जाते हैं कि 80 मिलियन 100 मिलियन का प्लेयर लेकर आओ. एक शर्ट सेलिंग होगा, हमारा शर्ट नंबर सेलिंग होगा, वो ऑरा बिल्ड करेगा. तो नहीं चाहिए भाई, मेरे को ऐसा प्लेयर चाहिए जो 90 मिनट की रन करे मेरे टीम के लिए. या So, यस. with this result, where do we stand as a prediction? Top four तो बहुत मुश्किल लग रहा है, but where do you see us at the end of the season? Udit bhai. और विघ्नेश बोल दे तू पहले, मेरा थोड़ा लंबा चलेगा. okay. uh, Before Watford game, I was very optimistic कि we will be going we will finish in the top 4. Champions League का कोई चांस नहीं है. I still stand to that. कि top 4 I think हम जीत सकते हैं, but that totally depends on how we perform against Tottenham and Arsenal. Those two are 6 pointers. अगर हम वहाँ से points ले लेते हैं तो and try to uh, be consistent basically from here on, तो हम कर सकते हैं. लेकिन Champions League I don't see, I don't have any hopes from Champions League, to be honest. To be very honest, top 4 we can still make it, but that totally depends on how we play against those two teams. और अभी तो crucial month है, लिवरपूल एंड सिटी एंड स्पर्स. तो स्पर्स के अगेंस्ट जीत जाओ, बाकी दो ड्रॉ, fine, understandable. Those two teams are the best in the league at the moment. So the best you can get out is a draw. Just make sure you don't lose to them. That's it. Udit bhai. ये टीम लिवरपूल से तो हारेगी पक्का, लिख के ले लो. सिटी का गेम अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर अस. व्हाई? बिकॉज इस गेम में वी हैव अ चांस टू काइंड ऑफ डू समथिंग टू देम, बिकॉज दे हैव बीन वल्नरेबल इन द लास्ट फ्यू वीक्स. क्योंकि दे हैव कंसीडर्ड गोल्स. ऐसा नहीं है कि उन गोल्स खा ही नहीं रहे और अच्छा भी खेल रहे हैं. वन ऑफ गेम्स आता रहता है उनका के पास 4-5 गोल मार के चले जाते हैं, बट वी हैव टू अटैक सिटी like pretty well. And I think if we get that result, it will motivate us to do better in the other games. I still don't see us winning against Liverpool. I see us knocking out Atletico, ठीक है, and then build on from there. Then we have what, Leicester, Everton, Norwich, Arsenal. ये 4 जो fixtures है, इसमें से 2 fixtures are tough. But if we beat City, we'll have enough confidence to get through these fixtures too. I think it's about that one game, that one big game that you have to win. इवन एथलेटिको का गेम कैन बी अ गेम चेंजर. ऐसा नहीं है सिटी के सामने हार भी गए, बट एथलेटिको का गेम निकाल लिया तो इट माइट हैव अ गुड इफेक्ट ऑन द लीग. एंड वी हैव लिवरपूल एग्जैक्टली आफ्टर एथलेटिको. सो आई थिंक ये जो सैंडविच हो रहा है अपने को लगने में it looks pretty dangerous, but if you go to see on the footballing side, it could be a game changer in our season. And then if we go on a run, because of उसके बाद अपने fixtures are not bad until the second last week of the season when we face Chelsea. Arsenal है, मतलब
क्या है, लेस्टर, एवर्टन, नॉरिच, आर्सेनल, ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन, then Chelsea and then Palace. We end the season there. All these fixtures are winnable except two, जो हम छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा. If we win all those games, we are getting into the top four. There is no doubt. Because बाकी लोग की टीम के fixtures are tough. It's not like उनको easy run मिलने वाला है. West Ham have big fixtures remaining. Arsenal has a lot of big fixtures remaining. ऐसा नहीं. Arsenal के postponements जो हुए, those are big games. Yeah, Those are Liverpool really big and games. Chelsea. Yeah, those are really big games. So they Absolutely. will drop. They will absolutely drop. So we are still in. Yeah. इवन मैं बोलता हूँ ना, 2 गेम हारेंगे उसके बाद भी वी आर इन. ऐसा Yeah. नहीं है कि वी आर टोटली आउट ऑफ इट. सो रिजल्ट गंदा था, उससे असर पड़ता है दिमाग पे अपना कि अब क्या होगा, ये नहीं होगा. लेकिन इन द लॉन्ग रन वी हैव टू काइंड ऑफ स्टार्ट कंसिस्टेंटली विनिंग और एटलीस्ट ड्रॉ द बिग गेम्स. हारो Yeah. Yeah. Which is So with that, let's see. जैसा मोहित भाई आपने स्टार्टिंग में बोला था, you were shocked to see Matic being the game changer. So we come back to the same old question. Palhinha, if he's being linked with us somehow. Palinia. Palhinha. Okay. Palhinha. Palhinha, Yeah. okay, हाँ हाँ. So I haven't followed him. I don't know about him. As far as I know, he is a DM, defensive midfielder from Sporting. Yeah. So since I don't know anything about him, I am not going to comment on that. I will let you to decide how good he is, how much he is going to adapt, and will he bring about that change that we need. 22-year-old है. Yeah. Yeah. है ना, 22-year-old है. He's good. But coming to Manchester United is getting unnecessary pressure in your career. First of all, उसके लिए उसका mentality सबसे ज़्यादा important है before even the footballing part starts. And on the field, Yeah. as much as I've seen him, he's fucking mentally very strong. थोड़ा सा पागल है वो, थोड़ा सा सनकी है वो. Which I think is something this team needs in the central midfield. सनकी in the sense ऐसा नहीं कि वो players को तोड़ देता है या fouls करता है, ये करता है. But his game has a sense of wanting to prove कि भाई I am dominating you. He does not play that physically also. He plays mentally. He plays, his positioning is in such a way that an attacking player gets confused कि मैं किस तरफ जाऊँ, because ये side भी दिखा रहा है मुझे, ये side भी दिखा रहा है, अपने जगह पे he is standing. What attacking midfielders do to defensive midfielders is they play on the defensive midfielders movement. So defensive midfielder अगर ज़्यादा हिलेगा, right, जो अपने हिलते हैं, so they have a chance to kind of maneuvering the pace. But he doesn't leave his position. He stays in that area and he dominates that area. So players are not able to understand कि ये अब किस तरफ जाएगा. वो unpredictability अपने को चाहिए, जो इस बंदे में है. Point ये है कि can he do it in the Premier League? अब ये जो myth है ना, ये myth है कि क्या ये Premier League में कर सकता है या नहीं. हर player कहीं भी कर सकता है if they are good enough to play. But वो pressure जो आता है ना, वो हमारा fan base लाता है, वो ये लीग लाती है. भले it's not that tough, but वो दिखाया जाएगा कि it's going to be tough. If he's mentally strong that way, we should be all over him. But I don't know this club. You guys know this club. Vignesh. Yeah. Mudit bhai summed him up perfectly. I watched him. I only watched 1 or 2 games, not much, but he's good. He's very good. His positioning, his awareness on the field is very good. I mean, as a soul, he's a very good holder. Not gonna lie, but to be very honest, I don't see anyone एक else चीज coming. बोलूं, एक चीज बोलूं. कभी मगवायर को रेड कार्ड हो गया और अपने पास बेंच पे सेंटर बैक नहीं है, अपन फ्रेड को खिला सकते हैं? मैटिच को खिला सकते हैं. मैटिच भी गेम में नहीं है, सोचो अपन फ्रेंड को टॉमी खिला खेल सकते सकता हैं. है. टॉमी नहीं खेल सकते. सेम इज विद दिस गाय मैन. सेम इज विद दिस गाय. ये सेंटर बैक भी खेल लेता है. अपने को चाहिए ऐसे प्लेयर्स. Exactly. Versatile, definitely, but I don't. Ayush, yeah, Vignesh, go on. Vignesh, go on. Sorry, I was just going to finish with कि I don't think अगर वो आएगा, the only player I see coming is Rice, the defensive midfielder. To be very honest, I know उसका price tag high है and blah blah blah, but वही आएगा. Because we've been scouting him for long. You know United. You know United very well. Yeah. So we're gonna pay for those whose price tag is higher than actually pay for a good player. So Rice बुरा नहीं है, दोनों अच्छे players Rice is also good. but Rice is also but good. because Rice is already proven in the league, or I like him, Rice. Not
not gonna Yeah, lie. he's good. But He's good. price tag is too much. But we will end up getting him only. So Hmm. Ayush has a question and he says, Ayush has a comment. It's high time we need Cavani. I know he's injured and is not coming for practice, but I have seen significant difference in gameplay when he Totally, has come to the field, especially the forward. Ayush, totally. you are right. Yeah, he shows That's the the thing, other na? players. He shows the other Yeah, players how to kind of approach the his game. movement is brilliant. His pressing down and pressing is brilliant. His covering the grass and covering the field is brilliant. Everything is brilliant. But the only problem with him na, is he is not available. When you need him na, in big games, he's not there. He's injured most of the times. So you need somebody who is always there and who performs. Like बड़े players बड़े बनते हैं ना. Enormously बड़े players बड़े बनते हैं because they consistently are on the pitch and they're consistently scoring goals that win you matches, that win you trophies and win you big matches. रोनाल्डो बड़े मैचेस का प्लेयर इसलिए बना क्योंकि बड़े मैचेस में गोल करता है. रूनी बड़े मैचेस का प्लेयर इसलिए था क्योंकि वो बड़े मैचेस में गोल करता था. Ruud van Nistelrooy, I don't think most of the people who are, especially the young United players, don't haven't even seen what RVN was. yeah, We used to see him. He उससे better finisher technically I haven't seen in my life. He was the perfect poacher, perfect poacher. yeah, तो वैसे प्लेयर्स अब नहीं बनते हैं. वैसे प्लेयर्स और वैसे प्लेयर्स का लेवल अलग रहता है. Like Haaland right now, Haaland, he's at that level. That guy is at that level that Yeah. he can finish the games. But Cavani अब एज हो चुका है यार और वो बहुत जल्दी एज किया है एक्चुअली. 34 years shouldn't be like इतने ज्यादा इंजरीज नहीं होने चाहिए. Zlatan was It's also okay. there. I still think that Cavani has done more good to this club. No, I'm not saying. I'm not Yeah. saying. I'm not saying. I'm saying वही. that उसका body बहुत Because जल्दी deteriorate कर गया. totally, totally. No, no, वो होना भी था. He's not played हाँ, in the league before ये वाला. correct. और Yeah. Rashford totally out of form. Yes, Ayush agreed. अभी मोहम्मद भाई ये जो बोल रहे हैं ये इसके लिए बोल रहे हैं पलिनिया के लिए ही. Good Uh, solid DM less than 25. Yeah, would be good. he's right. We need another midfielder apart from him too. See, not another. We need two. Anurag, two midfielders are absolutely अच्छा needed, अनुराग but है I वो think we सॉरी will need, yeah, I think we will need three of them because I think Pogba is going to go. Uh, I don't see Van de Beek staying, and I don't see Matic playing for us next season. So we will need to replace them. We need at So least at least at least 30 million for Van de Beek. मजाक नहीं कर रहा Yeah, हूँ मैं. नहीं अगर 20 मिलियन 25 मिलियन की बात हो रही है ना तो भाई उसको वापस ही ले आओ. अगर 30 मिल रहा है तो निकाल दो. टेक द 10 million L on him. It's okay. Because by the way, yes. By the way, yesterday against City, he made more ball recoveries than any other player. yeah, but he got injured, no? In the end, thigh injury was good. So हाँ let's तो just इतने hope दिन it's बाद not big. खेलेगा तो प्रेशर आएगा ही. Let's hope it's not big injury. But he has been good for Everton. ना. Overall, he has been good for Everton. decent. उसका वर्क रेट उतना उसका खराब नहीं है जैसे लोग बोल रहे थे. उसका second game was piss poor. He lost ball position many times. Okay, But makes against City, he sense. was good. But coming back to Ayush Bhai ka point, he said कि Cavani is needed back ASAP. I think Ronaldo also recently with Ragnick meeting, he said कि we should be trying, playing with the two strikers system more often than not. वो actually helps Ronaldo as well. We saw that against Spurs, where they two Absolutely. combined for the goals. और मैं चाहता हूँ कि ये हुए अब. ये historically भी हुआ है. Ronaldo नहीं मैं historically चाहता हूँ. has always played with two striker and has performed. Like Real Madrid में Benzema रहता था उसके साथ. So it always helps him. I want this experiment to happen at least. रैंगनिक अगर ट्राई करना चाहे तो नेक्स्ट मैच में ट्राई करे. दिख जाएगा अपने आप क्या है क्या नहीं. So करेक्ट. देखिए problem मतलब ये जैसे है कि वो आप अगर आप हिस्टोरिकली देखो ना, रोनाल्डो हैज ऑलवेज डन बेटर व्हेन ही इज प्लेइंग विद somebody else. Like Rooney used to be there in United when he was in the first phase He basically for needs one goal scorer to sacrifice his goal scoring for him. करेक्ट एग्जैक्टली. yeah. बिकॉज होता ही है ना क्योंकि आप दो अगर उस लेवल के गोल स्कोरर हो ना तो एक तो आपको प्लेयर्स खींच लेगा एंड देन ही कैन डू व्हाट ही डज. वो अभी उसको नहीं Yeah. मिल पा रहा है. तो Yes, प्रॉब्लम ये Vinish. है कि कवानी फिट भी तो नहीं है ना आयुष भाई. प्रॉब्लम ये है करेक्ट. कि वो हमेशा इंजर्ड रहता है. प्लस उसके लास्ट 10 गेम्स देखो आप रोनाल्डो के. यू डोंट नीड अ सेकंड स्ट्राइकर.
जितने क्लियर कट चांसेस उसको मिले हैं, चांसेस आप बन रहे यू हैं, नो यू नो, इट्स इवन इट्स हाई टाइम सैंचो दैट ही टेक्स द ब्लेम, साइड से यू ज्यादा नो। करके बनता है. कल भी यू नो आई सॉ हिम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। भाई तू फ्रस्ट्रेट खुद पे हो यार, मतलब यू आर नॉट फिनिशिंग, हाउ कैन यू I ब्लेम अदर I प्लेयर्स? think he was frustrated at himself also. वो है ही वैसा, ही बट उसका वाज, दिख बट बहुत जल्दी जाता है. सम ऑफ द रिएक्शन इज यू नो, होता है. मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली, बट एनीवेज, मेरे को भी नहीं आया, बट या Okay. लेट्स बी कुछ पॉलिटिकली नहीं। करेक्ट हियर. Let's be politically correct. So, being correct, was Ralph correct to bench Harry Maguire? हाँ Udit bhai. या नो डाउट. Okay, Vignesh, go on. You have started. हाँ या ही वाज एब्सोल्युटली राइट। पिस पुअर रिसेंटली उसके परफॉर्मेंसेस, आई मीन इट्स लाइक कि एक गेम अच्छा देगा, फिर 2 गेम खराब खेलेगा, फिर एक अच्छा गेम देगा, सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी। द ओनली कंसिस्टेंट सेंटर बैक्स वी हैव सीन लिंडेलोफ एंड वारान, सो दैट शुड बी द सेंटर बैक पेयरिंग इन द बिग गेम्स एज वेल। आई रियली फील कि ये पूरा जो मार्च का मंथ है, वी शुड स्टिक टू दिस सेंटर बैक पेयरिंग लिंडेलोफ एंड वारान। Yeah, and इसको Maguire should गलती be से भी made to work hard and understand that his position is not going to be permanent, which is when he'll start performing, which is when he'll एग्जैक्टली come with the things that we want him to. And we defended very very well yesterday. Like chances बहुत ज़्यादा Absolutely. create नहीं हुए थे हमारे against. या In They even had in even nothing in the to. even in transition and in counter attacks, we were very composed and well positioned. Like, we can also say that Matic को वहाँ पे presence दिखाता है कि वो DM का positioning affects center backs positioning as well. both of our center backs yesterday made 5 ball recoveries each, so बहुत ही सुपर्ब है ये दोनों। आई फील दे शुड बी द सेंटर बैक पेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ, पूरा मार्च। रॉन भाई बोल रहे हैं it would be better playing Rashford as second striker alongside Ronaldo. Maybe, but Rashford currently खुद इतना खराब फॉर्म में है कि उसको मौका मिलना भी But सही है कि नहीं, वो I कुछ नो नहीं कुड बोल like वर्क, सकते. कुड वर्क this एक्चुअली, is an क्योंकि interesting उसके comment. रन्स, हाँ पोजीशन दैट अगर कुड वर्क उसका चेंज एक्चुअली। हुआ, मे बी सेंट्रल ज्यादा खेले अगर, ही कुड डू, बिकॉज वो जब विंग से ही सीधा सीधा भाग जाता है अब लाइन के बाहर, तो यहाँ से सीधा नहीं, सीधा उसके लाइन उसके के बाहर. उसके एक्चुअली रन्स इन बिहाइंड आर बेटर, वेरी गुड, या वेरी गुड. सो तो या वो सो या दैट फॉल्स कुड नाइन वर्क। भी तो कैन बी तो गुड. wouldn't Rashford से अभी एलांगा जिस फॉर्म में, wouldn't it be better to use him over there? एलांगा कैन प्ले इन नो दैट पोजीशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. वो तो कंसिस्टेंट रहेगा ही वहाँ पे राइट साइड पे. आई थिंक सैंचो के साथ या लेफ्ट साइड पे भी रहे. मतलब आई थिंक सैंचो एंड एलांगा वर्किंग वेल. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. अच्छा, एक एक तो एक दे आर उदित भाई एक बात दे बताओ, आर दे इफ आर वी गो टू स्ट्राइकर अप फ्रंट, हमारा मिडफील्ड का शेप क्या रहेगा? 4-4-2 खेलेंगे भाई, और उसमें से टू विल बी, देयर विल बी एनी स्पेसिफिक डिफेंसिव मिडफील्डर, बट देयर विल बी टू सेंट्रल मिडफील्डर्स, एंड इन दैट या पोजीशन वी विल बी, हम लोग का रहेगा. our wingers will have to come back because we will be exposed there. अगर हमने पॉग्बा खिला दिया फॉर एग्जांपल उस एक पोजीशन में, तो खत्म है, फिर तो खत्म ही है सीन, फिर we are exposed back again. But if we again go with McFred, who we have, then we could do something about it, you know. 3-5-2. I I honestly think try करते रहना चाहिए. ये Definitely. लाइक 3-5-2 में क्या होगा कि हमारा जो विंग बैक्स हैं, दे कैन गो अप, वी कैन प्ले वन 3-4 डिफेंसिव मिडफील्डर एंड पुट द टू देयर,3 पॉग्बा 3-4-1-2, एंड 3-4-1-2 भी चल सकता है, बट डिपेंड्स। no, I want 3-5-2 or better say 3-3-2-2. Like 3-3-2-2 in the sense कि 3 at the back, one defensive midfielder, two wing backs, two center attacking midfielders, and two strikers. Could be tried. बढ़िया फॉर्मेशन होगा ये, इंटरेस्टिंग फीफा लगेगा एकदम. तो फीफा का बात नहीं है, बट इन द सेंस ये हो जाता है कि हमारा डिफेंसिवली हम स्ट्रांग हो जाएंगे विद 4 people ऑलवेज देयर, एक डिफेंसिव मिडफील्डर टू स्क्रीन द बैक थ्री, और अटैकिंग वाइज भी हम हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि अगर हम ब्रूनो और पोग्बा को खिलाते हैं, बोथ विल हैव द फ्रीडम टू गो अराउंड, टू मूव अराउंड. तो एक प्लेयर को फ्रीडम देने से बेटर रहता है कि अगर दोनों को हम फ्रीडम देते हैं मूव अराउंड करने के लिए ना, सो इट विल बी मोर ऑफ अ गुड थिंग फॉर अस इन अटैकिंग वाइज. बोल मुदीत भाई चेयर अप, लीग वीग आते जाते रहते हैं, वी आर यूनाइटेड. हाँ भाई, यही बचा है बोलने के लिए तेरे को भी, यही बचा है मेरे को भी सुनने के लिए. मुदीत भाई, Maguire skill set along with his ability to hold the ball and recover the ball is average.
We need to think about his future, and hopefully the next manager can do. I hope Ron bhai. Bruno and Fred can be a good midfield combo in FIFA. No point Pratish of answer three. देगा. We need our fullbacks to explode more aggressively. रोहन भाई fullbacks तब explode करते हैं ना. हमारे fullbacks के साथ issue क्या है ना? On either of the fullbacks, issue ये होता है कि they can either defend or attack. अगर आप उनको दोनों बोलने दो ना तो वो confuse हो जाते हैं. बीच में आपको कहते हैं मिड लाइन के आसपास मिलेंगे on the counter attack और मिड लाइन के आसपास मिलेंगे when we are attacking. Yeah. तो ना ही वो completely Modern day fullbacks are supposed to run that whole patch. They correct. should You know don't have that. from one end to the other end, and also Correct. switch. Switch तो Yeah. दूर की बात है अपने में, but even running the whole field is नहीं very होता है. important. Like Robertson and Trent do, गाली मत देना मुझे. They do it. Sometimes Trent also goes on left back. ऐसा भी ये लोग का fluid movement हो जाता है. It's just On that corners. On corners. yeah, on corners. The corners they're on the same side. It's absolutely insane how that happens. मतलब मेरे को कभी-कभी कैसे नहीं बनाए. आप अगर उनका देखोगे ना सेटअप, सो इफ अ कॉर्नर इज बीइंग टेकन ना, अगर आपको लेफ्ट साइड से कॉर्नर लेना है ना, तो वो उनका राइट बैक आके कॉर्नर लेता है और उनका राइट जो लेफ्ट बैक रहेगा वो राइट बैक पे जाके खड़ा हो जाता है. ही विल ट्रैक राइट बैक फॉर सम टाइम. सो Yeah, we kind दैट of need हैपेंस. to experiment more with fullbacks definitely. उनको उनके आई strengths पे थिंक खिलाओ. I उनके mean, स्ट्रेंथ ही Van क्या है. Bissaka का strength is to tackle. ठीक है. तू अगर tackle भी कर रहा है, तो तू tackle करके recovery में थोड़ा fast बन. That's what those little things also could do well, in improvement. अगर तू tackle करके बट recovery करके आगे. सेम उदित भाई, ही इज वेरी वेरी गुड इन टैकलिंग, वी ऑल नो. तो क्या उसको हम आगे नहीं सेंड करेंगे? वही तो पॉइंट है कि उसको उसका अटैकिंग गेम इंप्रूव करना है. जब से आया तब से यही तो बोले जा रहे हैं हम. वही तो बट वही है दिक्कत कि है. तू अगर टैकल करके रिकवरी भी करता है, उसके बाद जो थॉट प्रोसेस है तेरा, उसके लिए रैंगनिक इज द परफेक्ट मैन. तू कोच हिम कि भाई तू आई थिंक अटैक कर वो साइड से फिर. और लेकिन आई डोंट हाँ, नो इफ ही इज मेड फॉर दैट, बट ही that हैज is टू बिकम दैट. नहीं, he is not bad. लेकिन वो ऐसा इशू होता है ना उसके साथ कि वो आगे जाके फिर उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है. वो 2/3 ऑफ द पिच जाता है एंड देन ही बिकम्स कंफ्यूज. तो आधा है हाँ, वो दे देता है, तड़तड़ी बॉल पास कर देता है कुछ. तड़तड़ी तड़तड़ी बोलते हैं उसको. इसका नहीं प्रॉब्लम वन बिसाके के साथ ये है कि अगर वो मैन को बीट भी कर देगा ना, तो वो क्रॉस नहीं डालेगा. he'll pull it back. हाँ वही तो भाई कॉन्फिडेंस तू नहीं है. ट्राई करना. जब तक तू ट्राई नहीं करेगा, जब तक तू डालेगा नहीं, तब एंड रिजल्ट कैसे आएगा? वो काटता है, उसको लगता है वाओ मैंने काट लिया. रॉन भाई का पॉइंट मैं एक बार लास्ट में कंप्लीट करता हूँ. तो मेरा थ्री एट द बैक जाने का बात रीजन ये था ना कि उससे क्या हुआ कि हमारे फुल बैक्स को थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि मेरे पास प्लेयर्स हैं एट द बैक और 1v1 सिचुएशन या 2v3 सिचुएशन 2v2 सिचुएशंस कम बनेंगे. तो आवर फुल बैक कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अटैकिंग और हम एक्चुअली शॉ को और टेलेस को एंड डैलो को बेटर यूज कर पाएंगे विद बैक थ्री. बट हमारे साथ फिर इशू यहाँ पे याद है कि हमारे पास बैक थ्री करने वाले प्लेयर्स नहीं है. I think है. If we just remove Maguire and put in Bailey over there ना, put in Bailey with Varane and Lindelof, that would be a very very good back three. प्रॉब्लम ये है ना प्रतीश भाई कि अगर बैक थ्री खेल रहे हो ना, तो उसमें आपको दोनों फुल बैक्स वर्ल्ड क्लास चाहिए. नहीं तो आपका सिस्टम ही पूरा यूजलेस है इन माय ओपिनियन. क्योंकि हाँ, नहीं, आपका सही है. ओवरऑल गेम प्ले उन पे ही डिपेंडेंट रहता है. और अगर आपके क्रॉसेस ही सब फार पोस्ट के बाहर चले जा रहे हैं, तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट सिस्टम? And Anurag, I agree. We played very well. ऐसा परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं हो रही. चांसेस की ही बात हो रही है. They should be banking on this performance के नेक्स्ट गेम में ये सब चांसेस कन्वर्ट करो. और क्या चाहते हैं हम? It's just the finishing touch नहीं आ रहा है. Chances were not taken. That's it. So going to that finishing, Ole came in और उस समय एक बहुत अच्छा वीडियो चला था when Ole said fucking shoot. Yeah. उसका एक वीडियो चला था जब when he was about to come to United और उसका I think मोल्डे का चल रहा था. So here we are again. We are shooting right now, but we are shooting off the target. Yeah. So issues कहाँ हैं? Is it mental? Is it physical? क्योंकि कहीं किसी कुछ जगहों पे मैंने देखा है suggesting that Ronaldo is overplayed. और is it technical? Technical तो रोनाल्डो के बारे में बोलना बेकार है. Like
it's just rubbish point over there. I don't think he's overplayed because he himself we wants to be played as much as he can. वो He हम सब can, जानते he हैं. wants to, but भाई age हो रहा है यार. we all know how he takes care of himself and Yeah. his mentality is कि he wants to play every match. But Yeah. गाली ready रखो, ठीक है. A manager has to decide whether he should be playing every match. Yeah. And if he cannot decide that, then it's the manager's fault. He should be telling Ronaldo, okay, I need you in certain spaces or certain timings of the game wherein you can come in and fucking change the game on its head. Because in that he'll have more energy to do so. ठीक है. Yeah. So अगर we can manage his timing when in which he doesn't get overloaded, maybe we could get something out of him more. I mean, जो already there है वो. उसके goals के बिना we are nowhere in the league. I agree. I totally get it. But जो chances वो miss कर रहा है वो I don't think it can go away so easily. एक phase हो hopefully. That's what. But we could Is try it is it something different. is it the same drop that we had last season after this the match that we lost the point Sheffield United? Hmm. Is it the same tip? नहीं यार, I don't think so. That was way different. वो मतलब मेरे को तो लगता है वो कोई दूसरा ही एरा था. It's like उसके बाद से बहुत कुछ हो गया इस क्लब में. And I honestly think that it's okay. जो हुआ है अभी इसको भूलो और आगे बढ़ो. जो फिक्सचर्स आ रहे हैं वो जबरदस्त खतरनाक आ रहे हैं and move on to positive things कि हमने अटैक किया अब हमें फिनिश करना है. ये गेम कंटिन्यू रखो और गोल्स मारो. That's football. वही करना है. मुझे लगता है the problem this season इनकी under Ole we were not a team that used to create so much and dominate the ball so much. अब मिड सीजन ये ट्रांजिशन आया है तो उसको ऑब्वियसली अडैप्ट होने में टाइम लगेगा. और वो टाइम लगने वाला है. इंटेंट दिखता है विघ्नेश भाई. अब वो दिखता है कि दे आर काइंड ऑफ टैकलिंग प्लेयर्स नाउ. दे आर मूविंग क्लोज टू प्लेयर्स. भले ही फाउल्स कर रहे हैं बट दे आर डिसरप्टिंग द ओपोनेंट्स प्ले वेल. तो ठीक है, देखते हैं. So going forward, what's next for us? City is coming. City के बारे में हम डिटेल बात करेंगे. It's a derby. But what should we expect from Manchester United in the coming weeks? The same performances but with the better finishing. हर टीम के अगेंस्ट चांस तो मिलेगा, ये गारंटी. Yeah. एवरी टीम के अगेंस्ट दिस टीम इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग चांसेस. अब फिनिशिंग की बात आती है. डिफेंस और सेंट्रल मिडफील्ड वो सब वी कैन एनालाइज बिफोर दोस गेम्स. बट द मेजर थिंग दैट दे शुड बी वर्किंग ऑन, इवन द फकिंग डिफेंडर्स, इज सेट पीसेस पे भी मारो. तुम ट्रेनिंग में भले सेट पीसेस पे गोल मारने का ट्रेनिंग ले लो अच्छी तरह से, बिकॉज चांसेस मिलेंगे. वैसे सिटी कंसीड ऑन सेट पीसेस देखा जाए तो. टॉटनहम आल्सो डू दैट. इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट हम स्कोर नहीं करते ना सेट पीसेस पे. वो चीज हो गया. अभी डेडलॉक होता है ना. अभी और 140 चांसेस लगेंगे दूसरा सेट पीस बोलाने. ये सब मत बोल रहे हैं, सब मत बोल. See, I'm expecting Rangnick to use this. He's very shrewd. I'm expecting Rangnick to use our set piece drought and make the opposition think कि लोग set piece पे वैसे ही हग रहे हैं तो थोड़ा they'll be light on it. I think he'll attack the set pieces strategy much better in the next games. In the City game you say? In all games, in all the big games. All the games, I think. Vignesh, crucial fixtures आ रहे हैं. Back to back big matches हैं. Rotations देखते हो आप टीम में? क्योंकि आपके पास प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं. लाइक रैशफोर्ड इज आउट ऑफ फॉर्म, रोनाल्डो इज आउट ऑफ फॉर्म, कवानी आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी. तो आप अपने फॉरवर्ड्स को किस बेसिस पे रोटेट कर सकते हो, कितना रोटेट कर पाओगे? रोटेशन तो आएगा डेफिनेटली, बट द ओनली रोनाल्डो तो डेफिनेटली खेलेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस. कवानी तो फिर भी अवेलेबल नहीं है, तो आर ओनली अवेलेबल स्ट्राइकर इज रोनाल्डो एट द मोमेंट. Sorry, Rashford I don't see starting. At least City के against I see Sancho, Ronaldo and Elanga. उसके बाद we can see a bit rotations, जैसे कि I feel Lingard should be playing a bit more purely because Rashford is struggling. Purely that's purely based on
he has not given Hannibal any chance. Do you see big match में out of a way No, surprise no, no, entry? no, 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 not happening. No, I hope that does not happen. I don't yeah, want our fan base to because abuse a kid because they will. yeah, नहीं होने वाला. और in the big games, I don't see, I don't think कि हम पोग्बा को भी देखेंगे. It will be Mugfred and Bruno. That's it. I think Pogba अच्छा, खेलेगा ये definitely. मैकटोमिने इज मतलब इंजरी क्या है उसका? बहुत मेजर इंजरी है. He was ill. No, no, no. He was ill. और Sick था he वो. Ralph said कि against City chances है he'll be back. Okay, we will need him actually. Of Yeah. course, We we are majorly missing will him. need every single player for that match. So आने वाले समय में विद द समर कमिंग, पोचेटिनो के बारे में हमने बात कर लिया, एरिक टेन हाग के बारे में हमने बात कर लिया, राल्फ के बारे में हमने बात कर लिया, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बियल्सा गोइंग ऑफ, क्योंकि वो कल हुआ है. सो बियल्सा इज नो मोर द मैनेजर ऑफ लीड्स. डू वी सी लीड्स बीइंग रेलिगेटेड दिस सीजन? Yes. चांसेस तो हाई है, चांसेस तो हाई है, स्पेशली नाउ दैट दे चेंज द मैनेजर, क्योंकि जो भी नया आएगा उसको टाइम लगेगा. प्लस आई थिंक they should have stuck with Bielsa at least till the end of the season, क्योंकि at this stage आप नया मैनेजर लाके क्या करोगे? उसके आइडियाज इंप्लीमेंट होने में टाइम जाएगा, और अगर एक दो रिजल्ट्स बैकफायर हो गए तो लग गए आपके. और ये टीम बियल्सा के विजन में बनी है. पूरा या पूरा बियल्सा का एग्जैक्टली. विजन है. दिस टीम इज टोटली बियल्सा रिटन ऑल ओवर इट. जो भी आएगा अगर असिस्टेंट किया उसका तो अच्छी बात है, because he'll keep on continuing the same way that the team प्लेस हाउस. has been playing. So I don't see any problem with them. I think they'll survive. I think they'll survive despite what has happened. But I still think they should have stuck with that man. But अगर नहीं है ना वो या तो भाई प्लीज, अगर वो अवेलेबल है तो ले आओ. बियल्सा, I am on board with this guy. इस बोर्ड के कोई साथ टेन नहीं चलेगा बियल्सा. कोई टेन यार सच. कोई पोर्चुगल. Yeah, I'm sure. I, no, I won't agree with that. I दो know, I रीजन know. A है. lot of people won't. I've been looking at all his वाओ. games. I've been looking at all his games. Leeds ka team has a lot of limitations, which our team doesn't. I think the way he wants to play is the United way for me. In attacking sense, defensive छोड़ दो. Defense अपना he's way too experienced to kind of manage a big club like us. If we don't get our prime targets, I think they should go for it. I'm not saying he should be our first choice. I think the issue with Bielsa is, and why we will not get him, is our board. Biggest Yeah, issue. क्योंकि Bielsa नहीं सुनने वाला किसी का. हाँ, He will fucking forget do it. what he wants, Which and is if you why know, उससे resign करके चल जाएगा वो. which is why I I think Ragnick will have a big call in this, and Ragnick and But Bielsa can work together pretty well if you go to but see. the Their thing is thought process of ना, football is the same. भाई the thing is ना, Ron मेरा भी सही सबसे बोल बड़ा रहा है. I agree. Ron, I agree. yeah. It would be disastrous for defense management, but maybe it's a big club. It will be his biggest managerial opportunity. We could see him change his ways a bit in terms of balancing his attack and defense. Risk मोदित भाई, है. मेरे लिए I इशू क्या है ना, मेरे लिए इशू क्या है इसमें, द रीजन व्हाई आई डोंट वांट बियल्सा is very simple. I didn't want Ole because he had won nothing. I don't want Bielsa because he has won nothing. Simple. You are going to come to United. You don't have a history of winning trophies. You don't have a history of competing at the top level. पोचेटिनो को भी मैं इसी बेसिस पे बोलता हूँ कि दैट ही बॉटल्स इट अप. तो फिर मैं किस मुंह से बोल दूं कि बियल्सा इज गुड फॉर अस? ये सबके विकेश अपने भाई, अपने बियल्सा रीजन. के ऊपर योर टेक. No, I'm not gonna say anything. I mean, ठीक है. In a way, it makes you think कि what if कि ऐसा अगर हम करें तो, but no, not happening. And personally, I wouldn't want that to happen as well. Because basically, जैसे आपने बोला है, I mean, he hasn't proven anything. अगर कुछ प्रूव किया ही है तो he's shown कि how much goals he can concede against big teams. 3, 4, 5, 5 के नीचे तो बात ही नहीं होती है. So no for me. No for me. The only two horse. It's a two horse race I feel. Poch, Ten Hag, जो भी है. Yeah, दोनों में yeah, से कोई that's
with the photos circulating अगर I think बहुत VSला चीजों थोड़ा को थोड़ा यंग होता ना तो the conversation would have been much more interesting. yeah correct अभी it doesn't make sense. भाई ट्रॉफिक लॉजिक से ना कॉन्टे अवेलेबल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सीजन डोंट वरी so नहीं मुझे तो कॉन्टे भी नहीं चाहिए. No. no it's okay I agree मतलब Conte has his own you know problems coming to any team and he can create the negative energy around the club and the team and what he with all his dramas and all जिससे Mourinho कुछ जिसके लिए हम बोला था मुझे भाई ये जो पूरी प्रॉब्लम हो रही है ना मैनेजर सर्च की एंड मैनेजर डिसाइड करने की, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे डिलेड Ole sacking as much as they did. दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि उन्हें पता था कि ये होना ही है, कंफ्यूजन रहेगा ही आज तो किसको बनाया जाए मैनेजर. मुदित भाई ये कंफ्यूजन को 3 साल पहले भी हुई थी. हाँ, ठीक है उस समय उनके पास एक मौका था when Poch was going all out to go out of that club Tottenham we had our chances and we fucking let that go. ठीक है ना तो ये अगर अब ये बोल रहे हैं कि हम इसके कारण नहीं कर रहे थे तो ओले को सैक तो आपने ओले को जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उसको बैक क्यों नहीं किया समर में वेयर वाज योर डीएम एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है ना जो चाहिए था उस वजह से, वो एक विंडो की वजह से वो बंदे का जॉब गया, उसमें भी ट्राई टू सस्टेन एज मच एज ही कुड. उसी एक विंडो के कारण मुरिनो का जॉब गया व्हेन यू गिव हिम फ्रेड वी फिनिश सेकंड एंड दैट सीजन. That's been our history with managers. Yeah, this guy again finished second and you don't give him a player. Modern day football is about consistently investing in your team. If your team has perfect 11 players, you have to build a team of perfect 18 players to back up 5 players who are in your 5 main players who are in your squad. City have done that. Liverpool are on course of doing that. Arsenal are on course of doing that. They have a great bench. They have a very good bench. Decent bench. At least if you are not able to get your prime targets in the summer or in the window, try building your bench. बेसिक स्ट्रेटजी है, वो भी नहीं करेंगे. Sometimes that helps you build your playing 11. कोई बेंच से ही उतना अच्छा निकल जाए आपके लिए परफॉर्म कर जाए आपका प्लेइंग 11 बन जाएगा. या वो लोग तो देख के लिवरपूल देख ले सिमिकास लेके आया. या कोई लॉजिक नहीं दिखा. रॉबर्टसन इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. सिमिकास लेके आया एंड ही इज फाइटिंग वेल. व्हाई ऐसे हो गया? ऐसे थोड़ी हो गया. चांसेस दिए ना, ऑप्शंस रखे ना. रॉबर्टसन का फॉर्म भी उस वजह से बेटर हो गया. अगर आप लोगों ने देखा होगा द फर्स्ट हाफ ऑफ द कार्बाओ कप फाइनल जो चालू था अभी, हाउ गुड वाज लुइस डियाज? हुआ क्या रिजल्ट? हाफ टाइम 0-0 था, उसके बाद अपना पॉडकास्ट चालू हो गया. सो मिलने चालू है 92nd मिनट. सो अगर आपने फर्स्ट हाफ देखा होगा तो हाउ गुड वाज लुइस डियाज? Super. He was. I didn't saw that match, so I won't be first half commenting. देखा भाई. So we missed out. Point. No, we have missed out on so many players. This is just another player that we have missed out. I'm not saying कि we should have gone for Luis Diaz. I'm saying कि जो मोदी भाई बोल रहे हैं कि bench strength बढ़ाओ and try to get that competition within your team. This is what I meant. That's why I gave you this example. हम वो काम बहुत अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं जो और बाकी टीम्स नहीं कर सकती हैं. And one of the major things that we can do is promote our youth. हमारे youth बहुत strong है, बहुत अच्छे हैं. उनको अगर आप promote करके अपना bench strength बढ़ा के उनको main team में भी adjust कर सकते हो in the future. But फिर वही पे बात आती है ना. We are not winning titles. Sorry. अभी unnecessary आप प्रेशर बढ़ा देते हो. म्यूट हो गया तो अभी अननेसेसरी हम प्रेशर बढ़ा देते हैं ना फिर यूथ पे. अभी फ्रेश एग्जांपल ले लो. एलेंगा पे हम कितना डिपेंडेंट है इन एवरी. That's the difference. I am not telling him to be our major starting player. I am telling them to strengthen the bench for next 2-3 years. जहाँ पे वो 2-3 साल बेंच पे ही करेंगे जो हम बोलते हैं ना कि प्लेयर्स को हम बाहर भेजते हैं एंड टू गिव देम एक्सपीरियंस. उससे बेटर है हम अपनी टीम में हर मैच में 10 मिनट 15 मिनट का गेम टाइम दें एंड विद अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स अगेंस्ट कप कंपटीशन हम उनको स्टार्ट कराएं. विद स्लोली स्टेडीली 2-3 साल में दे विल बी रेडी फॉर द फर्स्ट टीम. वो प्रोसेस में ही यू लूज टाइटल्स.
that had to be won cups. और For example, cup. उसी प्रोसेस से सर एलेक्स ने टीम बिल्ड करके दे दिया आपको जो 25 साल तक कंप्लीट किया. So you have to go through that pain ना. वो पेन दौर बैरियर आप अलग नहीं था क्रॉस ब्रजेश कीजिएगा तो भाई, आप क्या अभी करोगे? अलग है, अभी पेशेंस नहीं है. विघ्नेश We भाई are ऐसा है ना already कि 7-8 years जो without चीज winning the सक्सेसफुल हो title. जाता है ना, विघ्नेश भाई जो चीज सक्सेसफुल हो जाता है वो एरा बन जाता है. अगर हम आज करते हैं और आज से 5 साल के बाद हम टाइटल जीतना शुरू करते हैं और कंटिन्यूअसली जीत जाते हैं ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ मास्टरपीस एंड अ मास्टर प्लान. Yeah. तो वही है, जैसे एड ने ट्राई किया ब्रिंगिंग इन फेल्काओ एंड डिमारिया एंड एन नंबर ऑफ प्लेयर्स, अगर वो चल जाते हैं तो गैलेक्टिको वाज अ मास्टर प्लान फॉर अस. सो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग. अगर एक चीज नहीं काम कर रहा तो दूसरी चीज से ट्राई तो करोगे ना. Yeah. Yeah. So it's almost 1 hour for us here. It's almost 12 p.m. 12 a.m. actually. Yeah. So with this, let's finish this. Anything last comments, Punit bhai and Dinesh bhai? इससे बेटर खेल लेना बस, और कुछ नहीं Yeah. चाहिए. Just मतलब फिनिशिंग We करने will के be मामले में फिनिशिंग we करने will के be bringing you all. We'll be bringing you all pre-match very soon Yeah. of the derby and our prediction on that and the lineup we expect, the lineup series that we expect. So those who are for the first time coming here and watching our videos, please do like, share, subscribe and comment. हम लोग तो बहुत एफर्ट्स डालते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है कि हम और भी कंटेंट आपके लिए बनाएं. So please do that. Take care. Good night. GG.